शिल्पा, इस हफ्ते आपकी फिल्म इंडियन रिलीज हो रही है। क्या आपकी अपेक्षा जुड़ी है इस फिल्म से, या क्या एक्सपेक्टेशन? मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। मेरा काम है काम करना और बाकी मैं भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। और इस फिल्म के साथ भी मैंने यही किया है, काम। दैट्स इट, आई लेफ्ट द रेस्ट टू गॉड। आज हम कुछ बातें करना चाहेंगे आपकी वेरी पॉपुलर फिल्म धड़कन के बारे में। जी। धड़कन ने एक सॉर्ट ऑफ आपके करियर में लैंडमार्क सा बनाया। तो कितना आपकी तरफ से उस रोल में हार्ड वर्क गया, क्योंकि ऑर्डिनरी रोल नहीं था, रन ऑफ द मिल रोल नहीं था। तो कितना आपने उसमें कोशिश करनी पड़ी? I was lucky because I had a director like Dharmesh ji who presented me so well in the film, and मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि everything was done for me, you know, right from setting my look to my costumes to how I was supposed to say my dialogues. सब कुछ तो पहले से धर्मेश जी ने प्लान करके रखा था मेरे लिए। मेरा काम सिर्फ सेट पे जाकर रिपोर्ट करना था, and that is it, and I did just that. I think all the credit that I got from Dhadkan should go to Dharmesh ji, because he was the person who really put all his faith and confidence in me. आप कितना वैल्यू करती हैं इस फिल्म को अपने मेमोरीज में, अपने करियर में? धड़कन मेरे करियर में बहुत अहमियत रखती है, और I think it's given me a lease of life. Or what else? This happens to be, I happen to be here doing this interview because of Dhadkan, and there's no denying that. कितना डिटेल था ये जो रोल आपको दिया गया, कितना उसके ऊपर ऑलरेडी काम किया गया था धर्मेश का? क्या कैसा कैरेक्टर एक्सप्लेन किया गया, या कैसे आपने उसमें वर्क किया? Luckily for me, धड़कन जैसे आप जानते ही हैं, उन बनने में काफ़ी वक्त लगा, तो we had enough time to do our homework, and I think it only helped in terms of me understanding the role better. और उस वक्त I think when I was offered the film, thank God the film didn't happen immediately, because if you ask me, I was so immature, and as time went on, and life taught me so much in the process, and it only made me a more mature individual, more mature actress, and it only helped me to portray that role so much better. धड़कन के वक्त के शूटिंग इंसिडेंट्स में से कोई आपको यादगार कोई इंसिडेंट है? क्योंकि एक अलग सा माहौल बनाया गया था, एक एटमॉस्फेयर था फिल्म में, रोमांटिक सा भी था। ऐसा तो कुछ नहीं, बट नॉर्मली अगर आप सेट्स पे जाओ तो you can see people talking loudly, and artists holding mobile phones and talking in one corner. ऐसा कुछ नहीं था धड़कन के सेट पे. There was a big board outside Dhadkan sets which said no mobile phones allowed. And all of us had to switch off our mobile phones every time we would step one foot into the set, and that was a good thing. So our concentration level was at an all-time high, and that is one incident I can never forget. एक बार मेरा मोबाइल फ़ोन बाय मिस्टेक ऑन था, और धर्मेश जी को, और फ़ोन बजा उस वक्त, और धर्मेश जी को इतना गुस्सा आया उस वक्त. I can't forget that incident. Yeah. धर्मेश दर्शन और उनकी जो फीमेल कैरेक्टर्स वो जो क्रिएट करते हैं, पोर्ट्रेट किस तरह का है उनका? ये you think there's something special women characters of Dharmesh Darshan? Oh yeah, definitely. I think he's one of the few directors who really presents his heroines like goddesses, and he takes care about every little nitty-gritty, and every nuance of the heroine. And like I said, it just becomes so easy for a heroine to just work in a Dharmesh Darshan film, because half your job is done. I think more than half your job is done, and
I think he's just fabulous. He's just very. It's been a very enriching experience working with him. हम अपने अगले सेक्शन में बात करना चाहेंगे आपके को-स्टार्स की, स्टार्टिंग विद आपकी फोर्थकमिंग फिल्म इंडियन और उनके आपके साथ को-स्टार सनी देओल। जी। ज़्यादा लोग समझते हैं कि सनी एक शाय किस्म के एक्टर है, ज़्यादा हीरोइन से भी शायद बातें करते हैं, नहीं करते, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? Well, it's like working with any other professional, and what more can I say about Sunny Ji? I think he's got a great sense of cinema. I've said this time and again, and he only helps you so much more because he's been a director, and he's a very useful co-star, a very down-to-earth person, and a great human being. One of your first co-stars was Shah Rukh Khan. जी। Both of you achieved success together, sort of, with Bazigar. जी। तो क्या आपकी मेमोरीज हैं उनके बारे में, या क्या was it energy that you remember most, या क्या बात होती है? Well, Shah Rukh is energetic, I think, 24 hours of the day, and he has a never say die attitude, and he behaves like a newcomer. You know, he's हर वक्त वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, and he wants to keep learning and he wants to keep doing new stuff, which I think is fantastic for an actor. And I remember him encouraging me a lot, and I think he's been a very cooperative artist. Yeah. Another of your co-stars has been Nana Patekar, unusual co-star. Yeah. What did you think of him as an actor and a colleague? In the sense that not many people get to know him. He's considered a little eccentric. क्या आपको लगा? He's not at all eccentric. Actually, I think he's a very good artist, and I got to learn a lot from him. बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और वो फ्री वक्त में बहुत ही हंसमुख हैं. वैसे सेट पे भी बहुत हंसमुख हैं, और फ्री टाइम में खाना पकाते थे जाके किचन में. When we were on this outdoor in Pachmari, I remember him going and cooking food, and he really enjoys doing that. And I haven't really been put through his eccentricities, luckily. Another co-star who's considered controversial, Salman Khan. Yeah. क्या उन्होंने did he pull pranks with you, and did he Not sort at of all. pull your leg? या क्या था उनके? Actually, Salman and I have known each other for the last 6 years now. हम लोगों ने शोज़ किए थे कुछ 6 साल पहले, और उस वक्त से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं आया उनके बर्ताव में. और I think he and I can really call him a friend of mine, a true friend, one of the few co-stars I can call a friend. And I think he's a very good artist. I think people underestimate him, and I think he's a fantastic human being. Do you want some water? No, my throat is gone. I've been speaking the whole day, na, so. Another co-star of yours, previously, Shilpa Shetty, was in Dhadkan to work with him in films other than that. What do you think of him? He's still not considered the actor, that say others have got the kind of respect. He still has to achieve that. What do you think of? Well, I don't think so. I think he just won. He's a very intelligent actor, and he's very instinctive. And what more can I say about Sunil? You cannot underestimate him as an actor, because he just won the best supporting actors award and the best villains award this year. So he was very good in Dhadkan, and being from the same community, I happen to have a soft spot for him. So we all happen to be very clannish. I think he's a good guy. Yeah. कुछ हमें सुनाना चाहेंगे आपकी मदर टंग में कोई सुनील और मैं तो हमेशा बात करते रहते हैं तुलु में जब भी मिलते हैं. जैसे आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री इज बीइंग डोमिनेटेड बाय लॉट ऑफ पंजाबीज. तो जब भी दो पंजाबी लोग मिलते हैं तो पंजाबी में शुरू हो जाते हैं. ऐसे हम लोग दो बंड्स जब मिलते हैं तो तुलु में शुरू हो जाते हैं.
Shilpa, which co-stars do you have fond memories of? Generally हम आपसे heroes के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन maybe आपके who are your friends from the actresses? Are there any? Is it possible to have friendships? Of course, it's possible, and I do have a friend, a very dear friend of mine from the film industry, who happens to be an actress, and she's Tabbu. And we met on the sets of तरकीब. एक फिल्म पहले भी की थी मैंने उसके साथ, हिम्मत, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा combination work नहीं था. But this was a film where we really got to interact with each other, and I got to know that she's a very nice person. And yeah, we kept in touch. We still keep in touch. We meet, even though we don't have any work, you know, together. आपके co-star में से who do you admire the most for any reason? I think it would be Amit ji, a film that I did with him called Lal Badshah, and I don't think I need to give you all a reason why I admire him, because I think everyone is in awe of Amit ji. I think the very the very reason for me to do the film was, you know, to share the same frame with him was the most exciting part. And yeah, it has been an unforgettable experience working with him. हमारी अगली सेक्शन में हम बात करना चाहेंगे सॉन्ग सीक्वेंसेस. इंडियन में आपका कौन सा गाना है जो आपको लगता है, यू नो, आपके काफ़ी गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं, डांस नंबर्स, डिस्कोज में, कॉन्सर्ट्स में, सब जगह प्ले होते हैं. क्या इसमें कोई उस तरह का गाना है? कौन सा आपका? आई थिंक लोगों को ठाट नवाबी बहुत पसंद आया है फ़िलहाल. ऐसे दीवाना भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है. Well, my personal favorite happens to be Jana, which is very lyrical. और क्या कहूँ मैं? You never know what the audience likes, you know. आपके गानों में चुरा के दिल मेरा दूरियां चली, first I think big success, एक fantastic choreography और fantastic rhythm. जी. क्या आपकी memories है? Do you remember the hard work that went into it, or do you remember the success that it achieved? जब मैंने वो गाना सुना था पहली बार, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि it would become such a big hit, but it was choreographed so beautifully, and I guess the location they chose to do the song was so new at that point of time. People, it was Mauritius, you know, and people thought that the white sand was snow, and I had a lot of letters asking, I mean, a lot of fans asking me how I danced in the snow. I still remember that. Yeah, but that song happened to be a milestone in my career. Yeah. Another milestone has been the UP Bihar song, Yeah. the item song. Yeah. इस तरह के जो you know देहाती और folksy गाने होते हैं, जी. वो आपको ज़्यादा पसंद है या जो modern rhythms और modern type के, क्या enjoy करते हैं? I like good music. I think I like something that appeals to my ears, something that I react to. It could be anything. I don't know. You'll have to ask the audiences what they like me doing, you know, what they like to see. I don't know, so I'll have to just direct the question back to the audiences. I mean, what do you all like? Would you all like me performing on an Indian number or on a Western number? जब आप कॉन्सर्ट्स पे जाती है, तब ज़्यादा क्या डिमांड होती है लोगों की, किस कौन से गाने, क्या ये यूपी बिहार और इस तरह के गाने भी पॉपुलर होते हैं? Oh, definitely. UP Bihar. I think I've done some 50 shows on UP Bihar alone. बहुत पॉपुलर था वो गाना, बहुत पॉपुलर है वैसे आज भी. And I've performed on a lot of songs. Basically, I think for stage shows and concerts, you need songs that are really peppy, and I think songs that are a little fast and popular. So I think there's Aila Re, there's Dupatte Ka Pallu, there's so many of them.
आपके का कोई फेवरेट कोरियोग्राफर या कोई who do you get along the most with या किससे आपने ज़्यादा सीखा है? I think I've learned from every one of my co-artists. But my favorite choreographer, if you ask me, well, there are two. Sarojji. I think she's just fabulous with heroines. And one would be Prabhudeva. I think I have never danced the way I've danced in Mr. Romeo. Yeah. प्रभुदेवा के साथ स्टेप्स मैच करना क्या आसान होता है? बिल्कुल नहीं. It was not easy at all क्योंकि वो तो रबर जैसे हैं. उनको वो खुद ही कोरियोग्राफर भी हैं तो he can do anything. But it was just very difficult for me and but with him he's so adamant. जब वो डांस कोरियोग्राफ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि you can say नहीं मुझसे नहीं होगा. He's like आज नहीं तो कल होगा ही होगा. हम लोग कल तक इंतज़ार करेंगे. But you have to do this movement. So he's very adamant and that's a good quality. So. Another very popular song of yours, आइला रे लड़की मस्त मस्त. तो इस तरह के गाने क्या आपको खुद को भी पसंद आते हैं या ये जनता की मांग है? मैं बस वही करती हूँ जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं. तो आई गेस दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस इज़ लाइक. वी आर हियर टू केटर टू द ऑडियंसेस. हम लोग फिल्म्स थोड़ी अपने लिए बनाते हैं. I enjoy dancing, but I'm here because I have a job to do, and I'm doing just that. आप खुद अगर डिस्को में या नाइट क्लब में गई तो कौन से गाने आपको what gets you rocking? क्या आपको पसंद आता है? I hardly go to discos, so I don't know. It's something, I guess, it's something that. Something that's fast. हमारे अगले सेक्शन में हम बात करना चाहेंगे इंडियन के बारे में कुछ और इस तरह की फिल्म जो सनी देओल प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन, सनी देओल एक्टिंग, कितना स्कोप होता है आपके लिए? क्या सिर्फ गाने होते हैं या कुछ और भी? In terms of length, obviously it's not going to be as long as Dhadkan, but परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है. इस किस्म का किरदार मैंने कभी प्ले नहीं किया है. और वन ऑफ द मेन रीजंस आई साइंड द फिल्म इज़ बिकॉज आई न्यू दे वुड प्रेजेंट मी वेरी वेल. और जैसे कि आप ट्रेलर्स में देख ही रहे हैं, उन लोगों ने हमें प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से किया है. तो दैट वाज द रीज़न आई साइंड ऑन इंडियन. एंड एज फार एज द स्कोप for me goes, you'll have to go and see the film to see what I've done in the film. Sunny Deol as a producer, क्या आपकी राय है? I think he's a fantastic producer. He's very big-hearted and बहुत ही बड़े स्केल पे माउंट किया है इस फिल्म को. And he's made a very good film. Yeah. After Dabbar एक तरह की काफी expectations है सनी देओल के ऊपर और इस तरह की सब्जेक्ट का नाम भी इंडियन है तो आइडेंटिटी सा है. तो क्या लगता है आपको, क्या लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए? प्रोमोज में एक तरफ गाने जो स्टाइलाइज्ड वेस्टर्नाइज्ड भी है जो Well, it is a very stylishly made film and it is a patriotic film and it deals with the most talked about topic right now, terrorism. And I think luckily for us the timing is really good and it is a good film. It has a message and you'll have to go and watch the film to know what the message is. क्या आपको कोई एक्शन सीक्वेंस में आपकी इन्वॉल्वमेंट थी और आपको क्या लगा सनी देओल जब एक्शन करते तब ऑडियंस को हमेशा लगता है कि हाँ ये सच्ची शायद ये एक हीरो है जो सच में फाइटिंग कर पाएगा एक्शन? नहीं, वैसे तो कोई एक्शन सीक्वेंसेस में मैंने तो पार्ट नहीं लिया है, लेकिन yes, I'm a part of the climax where there's major action happening, but I haven't done any action sequences myself. But yeah, Sunny, I guess makes it look really real. Maybe that's why it's believable when he fights. He really looks like
he can he can bash up 10 people together, you know. Yeah, I think he's a good artist. That's why. क्या आपका कोई फेवरेट आउटडोर लोकेशन है जहाँ शूटिंग होते हैं और क्यों? नहीं, ऐसे कोई जगह तो नहीं है, बट आई गेस स्विट्जरलैंड, Malaysia, any place. I just love traveling, so you know. आप अपने घर में कितना इन्वॉल्व होती है और आर यू ट्रैवलिंग ऑल द टाइम और यू नो घर में भी कुछ आप करती है या इज इट अ स्टार हु इज हॉपिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड कंट्री टू कंट्री? जब घर पे होती हूँ तो कभी कभार कुकिंग कर लेती हूँ, बट बाकी और कुछ तो नहीं, झाड़ू कटका तो नहीं. मतलब घर में और क्या काम करती है अगर आप मुझसे पूछोगे. How interested are you in food and are you a food lover? Yeah, I love good food. I think basically when I look at a dish, it has to first look good, then smell good, and then taste good. That's the way I look at it. Yeah. We've seen you wearing wonderful clothes throughout the past few years. You know, how conscious are you of clothes and कितना आप choose करती है या pick करती है? I guess I never really, मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है, but आज देती हूँ because I think these things really matter, and the audiences have become so fashion conscious today. पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अभी देती हूँ. आपकी favorite pastimes क्या है? क्या पसंद करती हैं? Watching films, and what else? Being with my family. That's it. और कैमरा ऑन है शिल्पा, आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है इंडियन. If you want to say anything directly to the audience, tell you. Just want to say one thing. Please go to the theaters and watch Indian. And it's a good film, and I'm sure you guys will enjoy it because we've enjoyed making it. Thank you.